gums also. So better to just leave it remain. Let it remain. It's nice. So you are saying my teeth are big, right? A little bit maybe. What can I do for that? Nothing actually. It's just that we can correct it, but it's a big procedure to correct your teeth for a small improvement, and it looks nice like this also. So let's just leave the teeth. We'll take care of this. This I'll suggest to you that day very minimally. Don't do a lot. It won't be required. This we can correct the chin, make it pointy. The dimples सब कुछ हटा देंगे. Okay, fine. All right. Scar revision. Scar revision only the vertical limb, right? Yeah. So इनका कल करना होगा because they're going back. ठीक है. तो पूरा ब्लड टेस्ट अभी हो पाएगा कि कल ही हो पाएगा? तो कल इनको कराओ, कल मॉर्निंग कराओ सब कुछ. जल्दी आने के लिए बोलो. हाँ, इनको एनपीओ आने के लिए करो. लिसन, आप लोग कल पहले आओ. बिकॉज क्यों है ना, एक्चुअली कल other patients are scheduled, but you have to go back to Italy and all. So better come. I'll try to do first for you. Let us know when you want us to come. So come by 7 o'clock without having anything in the morning, empty stomach. And by 9 o'clock plan करते हैं. और उसको बुलाओ, वो धनम को बुलाओ जल्दी कल 8 बजे को इनका ब्लड सब कराने के लिए. हाँ, that we'll plan. Tomorrow hair नहीं करने वाले. Tomorrow we'll do the scar revision and we'll do the chin. Okay. We'll do the hair 1 or 2 days later. Okay. Let this thing go. For that we'll do the local anesthesia. Okay. And another question, I have to stay here, right? Yes. For 1 week. From tomorrow onwards, at least 5 days. Okay. Yeah. Is it? It's not going to be greatly comfortable. Okay, so that's why we was asking if we must have to stay here, or we can also. She can stay outside. I can't. Better you stay at least for 2 days. And we can't stay together here. Yeah, you can. Okay. But in the same room. In the same room. But first night you will be in the ICU. So you can't stay with her. So she can stay. You have a hotel room. Let her stay there in the comfort. No, I don't want to stay there alone, and I don't want to leave her alone because no, really, I don't want to go through all this. एक दिन. She will stay here on the bench. No. How can she stay? want to stay there. Okay, we'll make some arrangement. You want her to be there all the time. Yeah, with me. Oh, here or outside, anywhere. Okay, we'll see. Yeah. We'll see something how it can be done. Okay. You remind me tomorrow when you come that you want to stay. We'll make some arrangements. Okay. Maybe 1 or 2 days we'll make arrangements that you stay here with us, and then you can. I'll tell you tomorrow. Okay. One manager will take care. Okay, done. All right. So the hairline is okay like this, as I draw, right? We will This is do. the We will minimum. do again for you hairline. Don't worry. We'll finish with this hairline. I'll give you a better idea than this little bit. It should not be like a straight thing that looks not natural. So we will plan that. We will plan that maybe on Friday or little later. First we'll finish tomorrow. So I'll see you tomorrow. At 7? Yeah. Okay, fine. Bye bye. Thank you so much. So here what you see is a female hairline advancement that is happening right now. The area which you see is the donor side where we are harvesting the grafts from, and these grafts are going to be harvested from the donor side. Slits are going to be made in the recipient side where she wants till the area where she wants it to be advanced, and we are going to implant it there.
लेकिन फ्लाइट कब है? 2 कुछ बजे है। ठीक है, देखो हेयर में मेन थिंग है स्प्रे। कर रही हूँ हर 1 आधे घंटे में। हाँ, यहाँ आओ पास में, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे करना। बेंड करो, अभी देखो ड्राई हुआ है, बेंड करो थोड़ा। एक्स्ट्रा डाल सकती हो, और जो आ रहा है इसको पकड़िए। हाँ, होल्ड, इसको होल्ड कीजिए आप, बिकॉज क्या होगा ना, नहीं तो वो तो जो सर ने जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था नहीं वो फर्स्ट 2-3 डेज दे रहे। अब जब डे बढ़ रहा है, हाँ, नहीं तो फर्स्ट फोर्स करेंगी तो वो निकल जाएगा। अब जब टाइम हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा और फोर्स में करना है, बिकॉज जब आप फोर्स से करेंगे ना तो क्या होगा, वो जो देखो यहाँ पे दिख को क्लॉट की तरह, हाँ ये नहीं होना चाहिए। ये जो है पूरा सही है। अब इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोर से लगाओ तो वो निकल जाएगा बस। ठीक है, पकड़िए, नहीं आई विल थ्रो दैट। और आपका छीन का आज निकालो कि कल? आप देखो ये कल बेटर है। अंदर से सही है स्टिचेस या क्या हाँ, क्या है? स्टिचेस अंदर से सही रहेंगे, अब उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है। और ये लेकिन वाले? वो वाले तो अभी नहीं निकाल पाएंगे। 6th डे, अभी कितने दिन हुए? 4 दिन हुए ना आपके। हेलो 3 तारीख को होगा यार के சரி உடனே வரேன், அதை ரிப்பீட் சொல்லு எக்ஸசைஸ் பண்ணு। ये 3 तारीख को करा था। அண்ணா பிறகு கூப்பிட்டாப்பா, बोलिए। ये 3 तारीख को करा था। 4 5 6 7 आज 7 है ना? 4 दिन ही हुआ है ना, तो कब नहीं हो निकाला? पाएगा। कल नहीं, फिर परसों सुबह मुझे 9 बजे जाना है, लेकिन आप वहाँ निकालिए। नहीं, मैं किसी और डॉक्टर से रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ, किसी ने इधर उधर कर लिया फिर इतना जल्दी नहीं निकाल सकते, एक और दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन 9 तो फ्लाइट है। 9th कौन सी टाइम फ्लाइट है आपकी? 2:35 पे, मुझे 9 बजे यहाँ से निकलना है। ठीक है, 9 o'clock आओ। 9 हो सकता है तो निकालेंगे, गारंटी नहीं है। ऑल्टरनेट निकाल के देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद बाकी निकालेंगे। तो ये भी तभी निकालेंगे 9 तारीख को। क्योंकि यहाँ पे वेटिंग भी बहुत होता है आपका। ये ना हो कि हम वेटिंग कर नहीं होगा ऐसे। आपका फ्लाइट जब है तो अगर वेटिंग होता है तो बोलना है आपको कि हमका फ्लाइट है। आप हो गए यहाँ पे 9 बजे? मैं नहीं हूँगा, कौन निकालेगा? ये डॉक्टर प्रिया या मधु कोई तो कोई निकालेगा। मेरे से नहीं मिलने की ज़रूरत आपको। ओके। और मुझे एक चीज़ और चाहिए थी। हाँ, जो ये जेन्युप्लास्टी किया आपने, इसके बीच में प्लेट्स लगे हैं ना, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए कि यहाँ पे प्लेट्स लगे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब चेकिंग 9th को जब आप आएंगे तभी स्कैन भी निकाल लेंगे। आप ऐसा करो, एक कैसे हो सकता स्कैन वगैरह सब कल कंप्लीट हो जाए? कल कैसा होगा कंप्लीट? स्कैन नहीं, लेकिन स्कैन कर दें आप, रिपोर्ट्स वगैरह दे दें, बाकी ये जो निकालना है वो 9 को निकाल लेंगे। ऐसे हमारा ज़्यादा ठीक है, गुड आइडिया है। कल आ जाओ, फिर कल ये निकाल के आपको पूरा रेडी कर देंगे। सिर्फ इसके लिए आप सैटरडे को आओ तो टाइम बच जाएगा। अच्छा आइडिया, ऐसे आ जाओ। ठीक है, डन।